Okay, today we are going to start the classification of anti-ulcer drugs. Means that what are those drugs? Those are going to counter the hyper secretions of acid. ठीक है, वो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एसिड के प्रोडक्शन को क्या करती हैं, काउंटर करती हैं या नलीफाई करती हैं. ठीक है, तो वो हमने अब देखनी है. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर drugs. Kindly switch off your mics, everyone. Drugs. Okay. Then one by one, I will write the different classes of anti-ulcer drugs. Right. Okay. The first class of anti-ulcer drugs is antacids. First class is antacids. Okay. This is the class, and then one by one, I will write the name of drugs. Okay. So in antacids, there are different type of bases we use to न्यूट्रलाइज द एसिड. ठीक है, तो ये जो एंटासिड्स हैं इनमें जो हमारे पास जो ड्रग्स के नाम है, ये समझ लो जो केमिकल्स हैं. ठीक है, वो बेसिस हैं. ठीक है, वीक बेसिस हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट. फर्स्ट वन इज सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट इज द फर्स्ट वन. ओके, द सेकंड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, नेक्स्ट वन इज magnesium hydroxide. Next one is magnesium hydroxide. Right. The next one is aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide. Okay, right. This is the first class of anti-ulcer drugs. I am just writing the class. The first one is antacid is class, and these four are the weak, basic, you can say drugs. Okay. The second class is H2 receptor blockers or antagonists. Okay. H2 receptors antagonists. Right. This is the class. Then I will write the name of drugs. Okay. The first drug is cimetidine. First drug is cimetidine. Cimetidine. Okay. The second drug is ranitidine. Ranitidine. Okay. The next drug is nizatidine. Nizatidine. The next drug is famotidine. Next drug is famotidine. Right. There are four drugs in this class. H2 receptor antagonist. Antagonist means these drugs are going to antagonize or oppose the effect of histamine, which is physiologically produced by enterochromaffin-like cells, right? हमें पता है कि जो हिस्टामिन रिलीज होती है enterochromaffin-like cells से, फिर वो अपने H2 receptors के ऊपर आके बाइंड होती है और एसिड के प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है. तो if we block those H2 receptors present on the parietal cells blocked by these drugs, cimetidine, ranitidine, nizatidine, famotidine, then we can nullify the histamine effect, right? तो इस तरह इनको हम antagonist कहते हैं. Okay. Next class of anti-ulcer is proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors. Right? There are different drugs in this class. What is meant by proton pump? As you people know that in the parietal cell there is a pump or transporter. This one, and you people know that it is responsible for outflux of hydrogen ions
and influx of potassium ions, because this pump is responsible for uh, hydrogen exchange, or as you people know that this H positive means proton, positive means H positive means proton. So that's why these drugs or this class of anti-ulcer drugs are known as proton pump inhibitors, because you people know that this is a proton pump, ठीक है ना, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयंस को ये एक्सचेंज करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोटॉन पंप बोलते हैं, ये अकेला जो है, जो कि हमने पीछे नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा था। तो अब चूंकि बिकॉज दीज ड्रग्स आर द इनहिबिटर्स ऑफ दिस पंप, ठीक है, इसलिए फिर इनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, सोडियम कैल्शियम पंप और एक्सचेंजर, इसी तरह ये भी क्या है, एक एक्सचेंजर है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एंटी पोर्टर सिम्पोर्टर, उसी तरह का ये भी है। अगर तो वो सोडियम से लिंक्ड है, ठीक है, तो आपको पता है उसको कोर ट्रांसपोर्टर कहते हैं, और अगर वो किसी और आयन से लिंक्ड है, ठीक है, और उसमें एटीपी यूज हो रही है, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ ड्रग्स in the category of proton pump inhibitors, and you people are well familiar with these drugs. First one is omeprazole. First one is omeprazole, right? The next drug is S-omeprazole. S-omeprazole. The next drug is lansoprazole. Lansoprazole. The next drug is dexlansoprazole. Dexlansoprazole, right? The next drug is rabiprazole. Rabiprazole, right? Next drug is pantoprazole. Pantoprazole. So, okay, so there are 6 drugs in this category. Okay. Next is fourth class. इनको हम एक जनरल नाम देते हैं, क्या उनके अंदर फिर डिफरेंट ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, इनको एक बड़ी जनरल हम कैटेगराइज करते हैं। म्यूकोजल, आपको पता ना जीआईटी म्यूकोजा, ठीक है, तो यहाँ से निकला है म्यूकोजल। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ओके। So in the mucosal protective agents there are different subclasses, ठीक है। फर्स्ट सब क्लास है, उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं दोज आर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, राइट। नेक्स्ट इज बिस्मथ कंपाउंड्स, बिस्मथ कंपाउंड्स, ओके। ये अभी ना क्लासेज है, ठीक है, और इसके अंदर भी फिर कुछ ड्रग्स के नाम है, अभी मैं उनको बाद में लिखता हूँ, अभी मैं सिर्फ सब क्लासेज लिख रहा हूँ। द नेक्स्ट इज सक्राल फेट, ओके। अभी ये ये 3 है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें फर्स्ट टू आर द क्लासेस। फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इसमें एक ड्रग है, ठीक है। इन बिस्मथ कंपाउंड्स देयर आर 2 drugs एंड सक्राफेट इज इटसेल्फ इज अ ड्रग एंड इट एक्ट्स एज अ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। ओके, तो बाकी का मैं नाम लिखता हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में, ठीक है। ये सारे ड्रग्स के नाम आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। वाइवा में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। द एक्सटर्नल में आस्क यू पीपल क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग, यू पीपल हैव टू गिव ऑल द नेम्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। पहले क्लास का नाम फिर ड्रग्स के नाम, वो पूछेगा। एंटीसेप्टिक ड्रग्स के नाम बताएं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स के नाम बताएं, ठीक है। एच2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम बताएं। तो इस तरह आप लोगों ने उसको फिर क्या करना है, क्लासिफाई करना है। इन केस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग द ड्रग इज मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल, okay. In case of bismuth compounds there are 2 drugs or 2 compounds we can say, bismuth subsalicylate, bismuth subsalicylate, subsalicylate, the first drug or compound. The second one is bismuth subcitrate potassium, bismuth subcitrate potassium,
This is all about the classification of anti-ulcer drugs. Then one by one, we will see the pharmacology of these different classes of anti-ulcer drugs. Then I am going to recap classification of anti-ulcer drugs. First class is antacids. Okay. Uh, in antacid, there are four drugs or compounds or weak bases: sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, and aluminium hydroxide. Okay. The second class is H2 receptor antagonist, in which there are four drugs: cimetidine, ranitidine, nizatidine, and famotidine. The next class is proton pump inhibitor, and there are six drugs in this category. First one is omeprazole, the second one is esomeprazole, the next one is lansoprazole, the fourth one is dexlansoprazole, the fifth one is rabeprazole, and the last one is pantoprazole. Next are the mucosal protective agents. And in mucosal protective agents, there are three subclasses. The first subclass is prostaglandin analogs, and in case of prostaglandin analogs, their drug is misoprostol. Okay. The second subclass is bismuth compounds, and in bismuth compounds, there are two compounds: bismuth subsalicylate and bismuth subcitrate potassium, right? And the last one is saccharylate, which is itself a drug. Okay. Okay. Today we are going to discuss the treatment strategies or the drugs used for the treatment of peptic ulcer, right? And first class, as we discussed in the previous lecture, was antacid. Okay, today I will discuss the pharmacology of antacids. Pharmacology of antacids. Okay, antacids. First, I will write the name of drugs again. Please, name of drugs: sodium bicarbonate, sodium bicarbonate. The next drug is, or the next compound or the molecule is calcium carbonate, calcium carbonate. Carbonate. Next is magnesium hydroxide. Hydroxide. The next molecule is aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide. Right? Okay. Now I will talk about the mechanism of action. Mechanism of action of these drugs. Mechanism of action of antacids. Antacids. Okay, as already you people know that sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, and aluminum hydroxides are basically a basis. Alkalis हैं ये क्या alkalis or bases. Okay, as we know that these antacids are weak bases. Antacids are weak bases and reacts with reacts with gastric HCl, gastric HCl, hydrochloric acid, to form to form salt and water and water, which reduces the gastric acidity. Gastric acidity. Okay. So this is the mechanism of action of these antacids: sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide. Okay. Now I will write the uses of or indication. Indication.
indication of antacid. Sorry, only write indication. Or sorry, I will write clinical uses because clinical uses is an appropriate word. Clinical uses, right? The first use is peptic ulcer. Peptic ulcer disease, right? Second is dyspepsia. Dyspepsia. What is dyspepsia? Dyspepsia is basically is abdominal abdominal discomfort and pain due to indigestion, right? These are the two clinical uses of antacids. Now, I will explain further one by one uh, these compounds. First, I will talk about the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Okay. NaHCO3, right? Sodium bicarbonate. What basically happens in case of sodium bicarbonate? Definitely, it is a base. It is a base. Please switch off your cameras and mics. Sodium bicarbonate. NaSCO3. Definitely, it is a base and it will react with HCl, hydrochloric acid of stomach. Definitely. अब क्या होता है जब इन दोनों का रिएक्शन होता है आपस में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे आर गोइंग टू फॉर्म NaCl as we have already talked about. When these antacids are going to react with the gastric acid, they are going to form salt and water. Salt क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर बनेगा H2O। और क्योंकि ये एक कार्बोनेटेड मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसमें ये होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक्ट्स एज बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ए बाई प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें क्या होता है एज यू पीपल कैन सी हियर कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना इस वजह से अब हमें कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। क्या? पहला साइड इफेक्ट ये आएगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल, ये हम कैन से दैट साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स, ओके। एब्डोमिनल abdominal distension, राइट? एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब कि आपका पेट जो है ना वो थोड़ा सा फूल जाएगा बिकॉज देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड देयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि वहाँ से बन रही है तो इसलिए जिस तरह हम फील करते हैं ना कि हमारा पेट जो है ना वो भरा भरा लगेगा कि यार गैस बन रही है। ठीक है, बिकॉज CO2 इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। देन द सेकंड वन इज बेल्चिंग। बेल्चिंग, ठीक है, ये बेल्चिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम स्टमक। ये किसका कैमरा ऑन है? काइंडली अपना कैमरा बंद करो। रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम स्टमक ऑनवर्ड, राइट, टू नेक्स्ट एरिया, राइट। ओके, एक तो ये होगा। अब दूसरा ये हो सकता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना तो इसमें हमारे पास NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड, राइट। So this NaCl, as you people know that, will try to retain fluid. So we can say that fluid retention, fluid retention, because we know that sodium is osmotically active substance and it is excessively formed in the stomach. Definitely it will go into the blood and it will try to retain water। ठीक है, जब ये रिटेन करेगा तो इससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड
प्रेशर। ओके। उसके अलावा इट कैन वर्स द सिम्टम्स सिम्टम ऑफ CHF। CHF का क्या मतलब है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF का क्या मतलब है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। So this is all about the sodium bicarbonate. Okay, on the next slide I will discuss rest of the portion. Next is calcium carbonate. Next is calcium carbonate. ओके। इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट, अच्छा ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, ये वाला, इसमें जो है ना ये थोड़ा सा एग्रेसिव रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? दिस इज एन एग्रेसिव रिएक्शन। मतलब कि एसिड बेस का रिएक्शन जो है ना थोड़ा एग्रेसिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्लो रिएक्शन, रिएक्ट्स रिएक्ट्स स्लोली विद HCl। ठीक है, राइट। ओके, इसके अलावा इसमें इसके साइड इफेक्ट्स भी यही यही हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये भी कार्बोनेटेड है ना, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या हो जाएगा आपकी बेल्चिंग। क्या हो जाएगी? बेल्चिंग, क्योंकि गैस बनेगी ना। ओके। ओके। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? एक बात गौर से सुनो। इसमें ये होगा कि ये क्या कर सकती है? मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। क्या कर सकती है? मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। बिकॉज ये बेस है ना, क्या है? बेस है। तो ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होके तो वहाँ पे उसकी पीएच को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। एज यू कैन नो दैट मेटाबॉलिक मींस रिलेटेड टू ब्लड, अल्कोलोसिस मींस इंक्रीज इन द पीएच। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगी पीएच? क्योंकि ये एक बेस है, ये स्टमक से रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका स्टमक है ना, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपकी ड्रग आई, इधर ये ब्लड वेसल है या इधर ब्लड सप्लाई है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होकर किधर चली जाएगी? ब्लड में। ये ब्लड में पहुंचेगी तो यहाँ पे उसकी पीएच को क्या कर देगी? इंक्रीज, इंक्रीज पीएच। ठीक है, जब इसकी पीएच इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। एसिडोसिस होता है, एक अल्कलॉसिस होता है। तो अल्कलॉसिस होता है इंक्रीज इन द पीएच, एसिडोसिस क्या होता है? डिक्रीज इन द पीएच। ओके। और इसके अलावा ये और क्या काम कर सकती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो दिस कैल्शियम कैन आल्सो कॉज हाइपर कैल्सीमिया, can cause hypercalcemia. Okay, this is all about the calcium carbonate. I will take the question at the end of the discussion. Okay, next is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide and stomach. Oh, sorry, magnesium hydroxide and aluminium hydroxide. Right? Listen. In case of magnesium hydroxide and aluminum oxide, they also react slowly. Slow reaction. Okay. अच्छा, इसमें क्या होता है? ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इस केस में क्या होता है? इस केस में चूंकि ये कार्बोनेटेड नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस नहीं, क्योंकि इनके अंदर कार्बोनेटेड, ये कार्बोनेटेड नहीं, जिस हमने पीछे पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे सिर्फ अल्कली है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जहाँ सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ सॉल्ट और वाटर बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। तो इसलिए यहाँ पे नो बैल्चिंग, नो बैल्चिंग। राइट। ओके। अच्छा, अभी इस ये जो है ना, दो दो आपके अभी हम वी हैव डिस्कस टू कंपाउंड। कौन कौन से? 1 मिनट। एक है हमारे पास मैग्नीशियम है और एक है एल्यूमिनियम। ये दो हमने पढ़े हैं। ठीक है, मैग्नीशियम वन एंड सेकंड वन इज एल्यूमिनियम। ये आपको पता +2 होता है और ये +3 होते हैं। ओके, ये मैंने वैसे लिखा है। अब जो मैग्नीशियम होता है ना, ये इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये डायरिया करवा सकता है, डायरिया, पेचिश, डायरिया। ठीक है, और एल्यूमिनियम का ये एक साइड इफेक्ट है। ये हमने क्या लिखना है यहाँ पे? साइड इफेक्ट। ठीक है। ओके। और ये क्या कर, ये कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन।
पेशेंट। ठीक है। तो क्या होता है कि फिर क्या करते हैं, फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों वाले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी ना मिला के एक प्रिपरेशन बना दी। किसकी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है। तो जब उन्होंने इन दोनों की प्रिपरेशन को मिला के बनाया, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है डायरिया में क्या होता है, एक्सेसिव आपको अर्ज होती है फॉर द डेफिकेशन डायरिया में, और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, आपकी जो बाउल मूवमेंट्स है वो काम हो जाती है। ठीक है, मतलब एक ये दोनों एक दूसरे के उलट है। तो एक डायरिया करवाते हैं, एक कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं, तो जब इसकी प्रिपरेशन इकट्ठी होगी तो कुछ भी नहीं होगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ दीज एंटासिड्स। ओके। अभी जो है ना ये प्रिपरेशन आती है दो, एक आपने सुना होगा, इनो साशे आते हैं, इनो साशे। ठीक है, और एक टैबलेट आती है चूएबल, उसको कहते हैं ट्राइसिल, ट्राइसिल। ठीक है, जिस बंदे को हो रहा हो ना, मतलब वो कहे यार मेरे मेरे एसिडिटी हो रही है, मुझे जो है ना हार्ट बर्न हो रहा है, या मुझे हीटर कार आ रहे हैं, जो बंदा कहते हैं, उसको फिर अगर ये यूज़ करवाना इनो, इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं, कुछ लेमन ऑरेंज, लेमन ऑरेंज, राइट, इसके फ्लेवर होते हैं किसके, इनो साशे के। और ये ट्राइसिल, ये टैबलेट है चूएबल। ठीक है। ये जो है ना, इनके अंदर ये वाली जो है ना वो हमारी ड्रग्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम, उसके अलावा साथ इनके टारटारिक एसिड भी कुछ के अंदर ऐड होते हैं। ठीक है, ये जो इनो है इसके अंदर तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। ठीक है, और ये आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट भी है। ठीक है, और इस तरह के और मिलते जुलते बेसिस हैं इसके अंदर। तो ये दो आप कह सकते हो कि मार्केट के अंदर दो फार्मुलेशंस हैं जिनके अंदर ये वाले ड्रग्स हैं, और इनको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड डिस्पेप्सिया। Okay, dear students, today the topic of our discussion is pharmacology of H2 receptor antagonists. Pharmacology of H2 receptors antagonists. Okay, first let me to write the name of drugs. First drug is cimetidine. Cimetidine. Second drug is ranitidine. Ranitidine. The third drug is nizatidine. And the fourth drug is famotidine. Right? There are four drugs in this category. Okay, let's come towards the uh, mechanism of action. Mechanism of action of H2 receptor antagonists, right? H2 receptor antagonists, two receptor antagonists blocks blocks H2 receptors, two receptors on parietal cells, on parietal parietal cells, and suppress the gastric acid secretions, right? So this is the mechanism of action of these drugs, or you people can say that the pharmacodynamics. People can say that pharmacodynamics. Listen, as you people know that there are different types of histamine receptors. As you people know that H1 histamine receptors, H2 histamine receptors, H3 histamine receptor, and H4 histamine receptor. These drugs, H2 receptor antagonist, only inhibits H2 receptor, right? ये सिर्फ H2 receptor को inhibit करती हैं. These drugs not inhibit, not inhibit H1, H3, and H4. Means that these drugs have no effect, or you can say that lesser effect, lesser effect.
right? Okay. This is the mechanism of action of these H2 receptor antagonist. Now come towards the pharmacokinetics. 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 Pharmacokinetics of H2 receptors antagonist. There are two terms, pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics means what these drugs are going to do with the body, right? Pharmacodynamics. As you people can say that these drugs are going to block H2 receptor and are going to decrease the level of HCl in the stomach processes. So you people can see this is how the drugs are going to interfere with the body. But in case of pharmacokinetics, what uh, body basically going to do with drugs? So this is pharmacokinetic. Okay. In pharmacokinetic, you people can observe or see from these drugs like cimetidine, ranitidine, ranitidine, and famotidine. ये तीन जो ड्रग्स हैं दे these drugs undergo high first pass metabolism, right? This is the first point. This is the first point of pharmacokinetic. And nizatidine. From all these four drugs, nizatidine undergo very less the phenomena of first pass metabolism. First pass metabolism. Okay. And these drugs are excreted from feces and urine. मतलब कि ये फीसेस में से भी निकल जाती है बॉडी से बट आफ्टर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी और यूरिन में से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर वो फीसेस में निकलेगी तो इट्स मीन्स दैट कि वो लीवर से उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मतलब कि वो लीवर से पास हुई है, लीवर, ठीक है। और अगर यूरिन में हुआ इसका मतलब वो किडनी से हो गया ये, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ दिस ड्रग्स। नाउ कम टुवर्ड्स द क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस ऑफ H2O receptors antagonists, right? Here are the following clinical uses of H2O receptor antagonists. The first one is GERD. First one is GERD. What is meant by GERD? GERD means gastroesophageal reflux disease. Okay, GERD means gastroesophageal reflux disease. What is meant by this? Gastroesophageal reflux disease. In this disease, the stomach content try to go back into the esophagus, as the name indicates. Gastroesophageal reflux. Reflux means regurgitation, backward movement. तो इन GERD इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टमक का कंटेंट होता है, जो वहाँ पे जब खुराक पहुंचती है तो वहाँ पे जो एसिड रिलीज होता है, वो सारा कंटेंट पीछे की तरफ जो है ना वो बैक फ्लो करता है, ठीक है, जिसको GERD बोलते हैं। जिसमें इसमें क्या होता है एसिड की स्पीशीज बढ़ने की वजह से वो जो है ना वो पीछे की तरफ मूव करते हैं, दैट इज GERD। जैसे आप कहते हो कि मुझे जो है ना वो खट्टे ढिकार आ रहे हैं, ठीक है, और मेरा जो है ना स्टमक का जो कंटेंट ऐसा लगे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, कभी कभी आप फील भी करते हो अपने माउथ में वो कंटेंट, ठीक है। ओके, तो सेकंड वन इज पेप्टिक अल्सर। सेकंड वन इज पेप्टिक अल्सर, आप लोगों को पता ही है, पीपल ऑलरेडी नो इट। नेक्स्ट वन इज डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज डिस्पेप्सिया। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस रिलेटेड
गैस्ट्राइटिस। राइट, इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से, मैंने बताया था स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द अल्सर पैथोफिजियोलॉजी और अकरेंस ऑफ अल्सर। तो जब स्ट्रेस होती है तो एसिड की सिक्रीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्टमक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस, पेन एंड ब्लीडिंग। राइट, so this is all about the clinical uses of uh, H2 receptor antagonist. Now come toward the side effects. Come toward the side effects of H2 receptor antagonist. Right. First point is mental status changes. Right. कौन कौन सी मेंटल स्टेटस चेंजेस हो सकती हैं? कंफ्यूजन, ठीक है, और नेक्स्ट इज एजुटेशन। एजिटेशन। ओके। और ये कब होता है? जब हम इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, जब कोई पेशेंट इमरजेंसी के अंदर हो और वो स्ट्रेस में हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो, जाहिर सी बात है जब कोई बंदा इमरजेंसी में होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर, जाहिर सी बात है वो परेशानी में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उस टाइम पर उसको ये वाली ड्रग्स वैसे भी जा रही होती है साथ, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर हो जाता है उस टाइम बंदे को, तो ये वाली ड्रग्स वैसे ही साथ दे देते हैं। तो अगर ये वाले ड्रग्स क्या होता है, ये वाली ड्रग्स अगर इमरजेंसी में पेशेंट हो, और इन ड्रग्स को हम क्या करें, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ये यूज हो रही है, इमरजेंसी, इमरजेंसी में, और जाहिर सी बात है इमरजेंसी में बंदा जो है ना वो अपनी होशो में नहीं होता, तो उसको फिर आईवी ड्रग्स लगाते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस। आईवी का क्या मतलब है? इंट्रावीनस। या जब वो पेशेंट किधर होता है, आईसीयू के अंदर होता है, किधर होता है, आईसीयू के अंदर, ठीक है, तो ये वाली ड्रग्स उसको आईवी लगाते हैं इंट्रावीनस रूट के जरिए, ठीक है। ओके। और ये जो साइड इफेक्ट्स है, कन्फ्यूजन, एजिटेशन। एजिटेशन में होता है कि बंदा जो है ना ऐसे ही जो है ना वो, उसको अजीब अजीब से, मतलब कि वो उसकी हाइपर रहता है, हाइपर हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन मतलब उसको कोई समझ नहीं आ रही, तो ये मेंटल चेंजेस है। और ये सबसे ज्यादा किस ड्रग से होता है? साइमेटिडिन से। किससे? साइमेटिडिन से। राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज गायनिकोमेस्टिया। 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 ठीक है, ये है क्या बेसिकली गायनिकोमेस्टिया? इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज इन मेल्स। मेल्स के अंदर उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, ठीक है। ओके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लिसन एंड रिमेंबर। ये भी ज्यादातर किस ड्रग की वजह से होता है? साइमेटिडिन से। किससे? साइमेटिडिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट एंड इट इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज मेन साइड इफेक्ट ऑफ साइमेटिडिन, गायनिकोमेस्टिया, साइमेटिडिन? इसमें होता यह है कि बिकॉज यू पीपल नो दैट कि इंक्रीज ब्रेस्ट साइज इन मेल्स, ठीक है। तो आपको पता है मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर रिलीज होता है, जो कि जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे डायूरेटिक्स, मैंने आप लोगों को बताया था स्पाइरोनोलैक्टोन, बताया था ना, स्पाइरोनोलैक्टोन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द गायनिकोमेस्टिया एंड साइमेटिडिन इज आल्सो एसोसिएटेड विद गायनिकोमेस्टिया। तो जो ये टेस्टोस्टेरॉन होता है, या एक एक प्रिकर्सर होता है टेस्टोस्टेरॉन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं इसको? डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है किसका? टेस्टोस्टेरॉन का। तो ये क्या करता है, मेल के अंदर जाता है और उनके मेल्स के अंदर जाता है, ठीक है, और मेल के अंदर जो मेल की जो ब्रेस्ट होती है उसके ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं, और उनको बोलते हैं हम नेगेटिव रिसेप्टर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि ये वहां पे जाता है और ब्रेस्ट के साइज को नहीं बढ़ने देता। किसमें? मेल्स में, क्योंकि पता है मेल्स के अंदर तो ब्रेस्ट साइज कम होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, तो इसके लिए मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है, ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये मेल के अंदर क्या करता है, ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज नहीं होने देता। तो जो साइमेटिडिन होती है, नॉर्मली क्या होता है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड्स विद नेगेटिव रिसेप्टर एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। मतलब कि वो ब्रेस्ट की साइज को नहीं बढ़ने देता। लेकिन ये जो सैमेटिडिन होती है, ये क्या करती है, ये बेसिकली इस जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इसको अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देती, इनहिबिट कर देती है इसको, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है मेल की ब्रेस्ट के ऊपर, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका साइज इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का काम जो होता है कि ब्रेस्ट साइज को नहीं बढ़ने देता होता। ओके, ये तो हो गया हमें मेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर इट इज एसोसिएटेड विद गैलेक्टोरिया, विद गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया,
ये क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल विदाउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जाहिर सी बात है, फीमेल के अंदर क्या होता है, जब वो प्रेगनेंसी उनमें होती है तो उसके बाद उनके ब्रेस्ट से जो होता है ना वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस गिलैक्टोरिया, अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई लेकिन जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये ज्यादा किस केस में ड्रग्स का साइड इफेक्ट, और ये ड्रग का साइड इफेक्ट है, ये भी साइमेटिडीन की वजह से, ये भी साइमेटिडीन की वजह से होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो साइमेटिडीन है वो जो है ना वो प्रोलैक्टिन नहीं होता, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन उसका साइज, सॉरी उसका लेवल बढ़ा देता है इधर फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको पता है प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन द फीमेल्स। तो ये उसका लेवल बढ़ा देता है, जो कि अभी तक इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि साइमेटिडीन जो है ना वो एक और परिकर होता है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल। ये जो प्रोलैक्टिन है ना इससे बनता है, एस्ट्राडायोल से प्रोलैक्टिन इससे बनता है, ठीक है। तो ये इसके साथ इंटरफेयर करके ना तो इसकी लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्रेडी ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। वो कैसे होता है? अब ये देखो, ये एक नई बात है, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी ये बात, कि जो हिस्टामिन है इसके रिसेप्टर होते हैं हार्ट के ऊपर भी, H2O रिसेप्टर्स, ये होते हैं हार्ट के ऊपर H2O रिसेप्टर्स, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो ये वाली ड्रग्स हार्ट के ऊपर इन रिसेप्टर को क्या कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी दिल की धड़कन क्या हो जाती है, काम हो जाती है। ये एक और इसके साइड इफेक्ट, ब्रैडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट। फिर उसके अलावा बाकी डायरिया हो सकता है, ठीक है। और बाकी लेस, जिसको हम कह सकते हैं ना कि सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट हो, जिसमें डायरिया है, हेडेक है, फटीग है, ठीक है, ये हो सकती है हेडेक एंड फटीग, हेडेक एंड फटीग। So this is all about the pharmacology of H2 receptor antagonist. Pharmacology of the H2 receptor antagonist: cimetidine, ranitidine, nizatidine, famotidine. Mechanism of action of pharmacodynamics. H2 receptor antagonists block H2 receptor on the bladder cells and suppress the gastric acid secretion. These drugs not inhibit the H1, H2, and H4, means have lesser effect. Okay, pharmacokinetics. Cimetidine, ranitidine, and famotidine, these drugs undergo less first pass metabolism. Is that sorry, high first pass metabolism. But in case of nizatidine, this undergo very less first pass metabolism. Excretion physical तरीके होती है और यूरिन की तरीके भी होती है। क्लिनिकल यूजेस में GERD है, पेप्टिक अल्सर है, डिस्पेप्सिया, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। साइड इफेक्ट्स में मेंटल स्टेटस चेंजेस है, जिसमें कंफ्यूजन, एजिटेशन है, और ये ज्यादा इमरजेंसी में होता है। इसमें साइमेटिडीन का रोल है गैनिकोमास्टिया इंक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज इन द मेल, और ये भी साइमेटिडीन है जिसमें डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का रोल है। गैलेक्टोरिया, इसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है एबनॉर्मल इन फीमेल्स विदाउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ब्रैडिकार्डिया H2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से, ये आपको पता है H2 रिसेप्टर जीएस सिस्टम से लिंक है, तो ये वहाँ पे भी अगर हिस्टामिन का लेवल ज्यादा हो जाए किसी वजह से, ठीक है, तो तभी आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है। तो ये उसको वहाँ पे भी इनहिबिट कर सकती है, क्योंकि ये अब ड्रग पूरी पूरी बॉडी में जाके जहाँ जहाँ पे भी H2 रिसेप्टर होंगे ना उनको इनहिबिट करेगी। उसके अलावा डायरिया, हेडेक और फटीग, दीज आर वेरी लेस फ्रीक्वेंट और लेस सिग्निफिकेंट साइड। दिस इज ऑल अबाउट द H2 receptor antagonist. Is there any question you people can ask? Otherwise, the lecture is. Okay, students. Today we are going to discuss the pharmacology of PPIs. Pharmacology of PPIs means proton pump inhibitors. Okay. Uh, as you people already know that what is meant by proton, as you people can see in this diagram, this one. This is a proton pump. This is the proton pump that is responsible for movement of hydrogen ions into the stomach lumen and potassium ions back into the cell, and it is known as hydrogen potassium ATPase pump. Basically responsible for HCl production. ठीक है, कि ये क्या है, एसिड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं इन ड्रग्स को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये वो वाली ड्रग्स हैं, दोज ड्रग्स दोज आर गोइंग टू ब्लॉक द डायरेक्टली ब्लॉक द प्रोटॉन पंप एंड इनहिबिट द secretion of HCl or synthesis of HCl, right? Okay. And the name of drugs in this category are omeprazole, as we will already know these drugs. Omeprazole, uh, this one. Next, S-omeprazole, this one. Then lansoprazole, then dexlansoprazole, then pantoprazole, then rabiprazole. These are almost 5 to 6 drugs in this category. Okay. Now come towards the mechanism of action of proton pump inhibitors, or you can say that pharmacodynamics. Okay. These drugs inhibit the proton pump that I already shown you people. This is the
proton pump being blocked by these drugs. This is proton pump blocked by these drugs. Inhibit the proton pump and produce the gastric acid secretion of HCl. Okay, so this is the mechanism of, you people can expand a bit by yourself the mechanism of action of PPIs. क्यों? क्योंकि आप लोग उसकी डायग्राम भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, फिर आप नीचे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि these drugs inhibit the proton pump and inhibit the synthesis or production of HCl in the stomach by directly blocking the proton pump. ठीक है, अल्टीमेटली वो पीपल नो दैट कि जो एसिड सिक्रेशन वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ बढ़ती हैं, जैसे हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, ठीक है, M3 रिसेप्टर्स, उसके बाद जो है वो डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं। तो जो हमने पहले ड्रग्स जिनको कवर किया, जिस तरह H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो हिस्टामिन के लेवल को कम करके जो है वो एसिड की प्रोडक्शन कम होती है, कम करती हैं। लेकिन ये वाली जो ड्रग्स हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये डायरेक्ट प्रोटॉन पंप को के ऊपर जाके अटैच होती है, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट बॉडी इज गोइंग टू डू विद दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल आर अवेलेबल इन IV एंड ओरल डोज फॉर्म। इसका ये मतलब है कि ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और ये इंट्रावीनस इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, उसके अलावा इनकी ओरल सस्पेंशन भी है, ठीक है, एज यू पीपल हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स सस्पेंशन, ओरल डोज फॉर्म, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल है? ओमेप्राजोल है, कौन सी है? ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, उसके बाद एसोमेप्राजोल, राइट, और देन इज पेंटोप्राजोल, प्राजोल, ये ओरल सस्पेंशन की फॉर्म में भी अवेलेबल। ओके, ओके, ये एसोमेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल ये IV और ओरल दोनों है, अभी मैंने आप लोगों को बताया IV एंड ओरल। लेकिन जो एसोमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल है, इसके अलावा जो ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्सलैंसोप्राजोल और रबिप्राजोल जो है, ये सिर्फ ओरल डोज फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स क्या होती हैं आप लोगों को पता है? प्रोड्रग्स आर दोज ड्रग्स दोज आर इन देयर पेरेंट फॉर्म और pharmacologically inactive when these drugs are administered in the biological system or physiological system, these drugs being activated by the enzymes of the body and then these drugs become pharmacologically active। तो इसका क्या मतलब होता है आप लोगों को पहले पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। प्रोड्रग का क्या मतलब होता है? मतलब ये पेरेंट फॉर्म में इनएक्टिव होती है, जब बॉडी में जाती है तो वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं लीवर में या जिस जगह पे भी वो जाती है, वहाँ पे एंजाइम उसको एक्टिव करते हैं, फिर वो अपनी क्या करती है, नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देती है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोड्रग्स इन पेरेंट फॉर्म और इनएक्टिव, ठीक है। ओके, next point is acid labile. What is meant by acid labile? Acid labile means these drugs when comes into the stomach, these drugs gets destroyed by the low pH of stomach। ये क्या होता है जब ये लिबाइल मतलब होता है सेंसिटिव है, ठीक है, एक होता है एसिड लिबाइल, एक होता है एसिड रेजिस्टेंट, ठीक है। लिबाइल और सेंसिटिव एक ही मतलब होता है। तो एसिड लिबाइल का ये मतलब है कि ये जो ड्रग्स हैं ये एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या होती है? एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए फिर क्या करते हैं, इन ड्रग्स को जो है ना वो कोड किया जाता है, ठीक है, कोटेड फॉर्म में ये अवेलेबल है, जिस तरह डिलेड रिलीज, डिलेड रिलीज, सॉरी डिलेड रिलीज डोसेज फॉर्म इसकी बना देते हैं, डोसेज फॉर्म, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रेन रिलीज बना देते हैं, स्ट्रेन रिलीज, रिलीज। ओके, फिर उसके अलावा इनको डिफरेंट कोड कर देते हैं, कोटेड फॉर्म। मतलब कि क्या होता है, टैबलेट बन गई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी है उसके अंदर उसके एक्सिपिएंट्स भी हैं, फिर उसके ऊपर कोड कर देते हैं कि जब वो एसिड के स्टमक, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है ना इस तरह, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस है, क्या है, हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस है, तो ये टैबलेट थी, ये इधर आएगी और ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर इसको क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको क्या कर दिया, इसके इर्द गिर्द कोड चढ़ा दिया इसके भी, ठीक है। तो जब अब ये यहाँ पे आएगी तो ये स्टमक की जो SBPH है उससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। फिर ये किधर जाएगी, इंटेस्टाइन में, किधर जाएगी, इंटेस्टाइन में, वहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगी, इसका जो कोड है वो ऊपर से उतर जाएगा और फिर ये जो है ना एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ठीक है। ओके, और अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो स्टमक है, क्योंकि सर इसने एक्टिविटी तो स्टमक में परफॉर्म करनी है, इसने बाइंड तो स्टमक में करना है प्रोटॉन पंप के साथ, तो ये आप कहने कीजिए, तो इसका ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे भी ये क्या होती है, मतलब कि उसको इंटैक्ट फॉर्म में रखने के लिए इसके ऊपर कोड करते हैं ताकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम ना हो जाए इस ड्रग की, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और वीक बेसिस। ये जो ड्रग्स है ना, ये ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्सामेथासोन, ये जो ड्रग्स हैं ये सारी वीक बेसिस हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी सारी ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, या तो वीक एसिड होती हैं या वीक बेसिस होती हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, ये एक अलग हमारी बहस है, ये हम बाद में कर सकते हैं, आप लोग मेरे से क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज सफीनामाइड। अब ये क्या चीज़ है हमें पता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ड्रग्स हैं कौन सी, हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये क्या है, प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब ये आती है बॉडी में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक था, ठीक है,
यहाँ से ये ड्रग आई इधर, ठीक है। अब क्या होगा, फिर ये यहाँ से एब्जॉर्ब होगी, आपको पता है इधर ब्लड वेसल होती है साथ, ठीक है। ये ड्रग आएगी इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से किधर जाएगी, यहाँ से लीवर में जाएगी, किधर जाएगी, लीवर में, किधर जाएगी, लीवर में, ठीक है। अब लीवर के अंदर ये क्या हो जाएगी जाके, एक्टिव। अभी हमने पढ़ा है ना कि ये इनएक्टिव होती है, एक्टिव। तो ये जो एक्टिव फॉर्म बनती है किसकी, इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की, उनको हम कहते हैं सल्फिनामाइड कैटाइन। मतलब कि जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, उनमें से जो ये एक मेटाबोलाइट है किसका, इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फिनामाइड कैटाइन। और ये क्या करता है, ये बेसिकली जाके बॉन्ड बनाता है इस हमारे इस पंप के साथ। मतलब क्या हुआ कि ये जो पंप है इसके साथ आके ये वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये है सल्फिनामाइड कैटाइन, ये सल्फिनामाइड कैटाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस सल्फिनामाइड कैटाइन इज गोइंग टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद दिस प्रोटॉन पंप एंड इनहिबिट इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इस तरह ये होता है। तो ये सल्फिनामाइड कैटाइन क्या है, ये एक मेटाबोलाइट है, और वी कैन से दैट दिस इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ आवर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये बनाता है कोवलेंट सल्फाइड बॉन्ड बॉन्ड विद विद प्रोटॉन प्रोटॉन पंप, राइट। ये सल्फिनामाइड कैटाइन है। शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, अच्छा अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन द एम्प्टी स्टमक। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको खुराक वगैरह के साथ या फूड के साथ खाएं, इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स विद फूड और विद आवर डेली फूड कंजम्पशन, ठीक है, उसके साथ अगर हम लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो ड्रग्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये फूड के साथ चिलेट्स वगैरह भी बना सकती हैं। उसके अलावा आपको पता है कि इन ड्रग्स ने क्या करना है, प्रोटॉन पंप के साथ जाकर अटैच होना है, ठीक है। तो अगर आप इसको खाने के बाद लेंगे, तो जब आप लोग खाना खाएंगे तो स्टमक में ऐसे तो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप खाना खाते हो तो ऐसे रिलीज होता है। तो वो तो अल्सर अगर हुआ वो सारे काम तो हो जाएंगे, वो सारे काम तो हो जाएंगे, मतलब कि एसिड की सिक्रीशन तो बढ़ जाएगी। तो जब आप खाना खाने से या खाने के साथ नहीं, खाने के बगैर लेंगे, तो फिर इन ड्रग्स के इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये एचसीएल की प्रोडक्शन होने से पहले ये स्पर्म को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें अच्छा फायदा मिलेगा। जो नॉर्मली जो थोड़ा सा ऐसे रिलीज होता भी है तो उसको भी ये काम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, वो कहता है कि 1 आवर बिफोर मील इनको यूज करना चाहिए। उसकी रीजन अभी मैंने आप लोगों को बताई है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग बाद में यूज करोगे तो ऐसे तो लीक हो जाएगा, वो सारी एक्टिविटी तो हो जाएगी, तो आपको फायदा क्या होगा ड्रग लेने का। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, मील से आधा घंटा या घंटा क्या करते हैं, प्रायर यूज करते हैं पहले। वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रायर टू टेक मील, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो ड्रग्स है ना, ये प्रोटॉन पंप के साथ एक बार अटैच होती हैं, ठीक है, और फिर ये बिल्कुल भी कभी भी डिटैच नहीं होती, फिर नया प्रोटॉन पंप बनता है, ठीक है। इसका ये मतलब है इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है, कि एक बार अटैच हो गए ड्रग्स तो प्रोटॉन पंप for the rest of the life will be destroyed. Then new hydrogen potassium ATPase will be formed to perform normal physiological activity. और उसके अलावा क्या होता है, वो कहते हैं तकरीबन 18 आवर्स लगते हैं न्यू प्रोटॉन पंप को बनने के लिए। तो इसका मतलब है कि इन ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो तकरीबन 20 से या 18 से 20 21 22 घंटों का राउंड अबाउट रहता है। Means that the effect of these drugs remains almost or approximately 18 to 20 hours because new potassium pump takes 18 hours to form, ठीक है। तो ये क्या होगा, 18 घंटे तक इन ड्रग्स इफेक्ट रहते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं ये हिपैटिक या रेनल या फिर फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होती है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द clinical uses of proton pump inhibitors. First one is gastroesophageal reflux, as you people already know it. The second point is acid induced ulcer, right? H pylori induced ulcer, dyspepsia, and stress induced gastritis. Gastritis means bleeding of GIT. Bleeding of GIT. Oh, okay. So these are the clinical uses of proton pump inhibitors, and the side effect of proton pump inhibitor will be discussed in the next lecture. Okay, the lecture is over. Okay, dear students, in the previous lecture we left here uh, the side effects of proton pump inhibitors, right? So there are different side effects of proton pump inhibitors. First, we will discuss the general side effects. The general side effects of proton pump inhibitors, and those might be diarrhea, headache, and abdominal pain. And these side effects only happens in 1 to 5% of the individuals. ये सिर्फ 1 से 5% लोगों में हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। There might be two type of infections associated with the proton pump inhibitors, ठीक है। फर्स्ट उसमें ये हो सकता है कि गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो सकता है, क्या, ये जीआईटी इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी
इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब उसमें क्या होता है? अब देखो, जीआईटी इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब गौर से सुनो मेरी बात। आपको पता है, इन आवर स्टमक देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एसीएल, एंड दिस एसीएल इज बेसिकली गोइंग टू डैम्पन द ग्रोथ ऑफ और कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना? कि जो भी बैक्टीरिया हम कोई इंजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता है हम खुराक खाते हैं, हमारे भी उस खुराक के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर मर जाता है। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब उस एसीएल के प्रोडक्शन को कम किया हुआ है हमने ड्रग्स के जरिए, और वो ड्रग्स डिफरेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, अच्छा। तो जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी एसिड की प्रोडक्शन कम होने की वजह से अब जो बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिकली आपकी बॉडी में एंटर होता है, आपकी जीआईटी में एंटर होता है, वो वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीआईटी इन्फेक्शन। और रेस्पिरेटरी जीआईटी, या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी की, वो वहाँ से वो बैक्टीरिया वहाँ से बाईपास करके तो किधर चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से फिर किधर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें वो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम, सॉरी, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, राइट? एंड दिस bacteria, and along with other bacteria, can cause hospital and community acquired infection, राइट? तो ये इस तरह जो है ना ये इन्फेक्शन में हो सकती है। द रीजन इज द ओनली डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिया। ठीक है, जो कि एसिया हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है उसकी कम होने, क्योंकि नॉर्मली वो क्या कर रहा होता है, एज एंटी बैक्टीरियल काम कर रहा होता है नॉर्मली। तो जब वो हम कम कर देते हैं तो एसीएल की प्रोडक्शन चूंकि अब कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया वो वहाँ पे जाकर जेडी का भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और किसकी इन्फेक्शन कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर आर अदर बैक्टीरिया एज वेल, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको क्या किया, मेंशन किया है, जिसमें इसके अलावा साल्मोनेला बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, शाजीला है, रेस्ट एंड मेनी मोर। ठीक है, जिसमें डिफरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें ठीक है निमोनिया हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये है इन्फेक्शन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की वजह से, राइट? ओके। अब इसमें आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर वी हैव स्टडीड डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, लाइक फॉर एग्जांपल एंटासिड और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, व्हाई दिस ड्रग्स आर नॉट गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन। तो इसका आंसर ये है कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं उनका पावरफुल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं। बट इन केस ऑफ H2 receptor antagonist and local antacids, there are chances, there is small production or there is a bit production of HCl there। ठीक है, जिसकी वजह से उन ड्रग्स के ये वाले साइड इफेक्ट्स या इन्फेक्शन वाले साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। नो कम टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन। क्या मतलब? अच्छा, गौर से सुन मेरी बात, लिसन एंड रिमेंबर, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल टेक दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। लिसन, न्यूट्रिशन किस तरह डिस्टर्ब होती है आपकी बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स? तो सुनो जरा। अच्छा, ये आपका स्टमक है, राइट? अब इसमें क्या होता है कि इस स्टमक के अंदर ना एक फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर, मैंने आप लोगों को बताया वो फर्स्ट ईयर में। उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट? IF। और ये है क्या? इट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, राइट? अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज लाइब्रेटेड, इज लाइब्रेटेड, यस, इज लाइब्रेटेड इन एसिडिक एनवायरनमेंट, इन एसिडिक एनवायरनमेंट। ओके, ये क्या होता है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या करता है, ये आप जो लेते हैं ना विटामिन B12, विटामिन B12, ठीक है, आप खाते हैं विटामिन B12, ठीक है, वो विटामिन B12 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, और फिर मैं कहता हूँ कि दिस इज विटामिन B12। ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और फिर ये स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं। विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर दिस विटामिन B12 विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ पहले, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट की मौजूदगी में लिबरेट होता है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट ना हो तो इंट्रिंसिक फैक्टर लिबरेट नहीं होगा, जब इंट्रिंसिक फैक्टर लिबरेट नहीं होगा तो वो
विटामिन बी 12 के साथ अटैच नहीं होगा। जब विटामिन बी 12 के साथ अटैच नहीं होगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, किसकी? विटामिन बी 12 की। और आपको पता है कि दिस विटामिन बी 12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसीज प्रोडक्शन, ठीक है, और अदर और भी वे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जिससे आपको क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया, एंड इट इज़ वेरी रेयर केस, ठीक है। तो ये एक साइड इफेक्ट है इसका, किनका? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। उसके अलावा जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, किसका? एसिडिक इन्वायरमेंट, स्टमक, दैट आल्सो causes the release of calcium, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सारे जो आयंस है ना, ये भी एसिडिक इन्वायरमेंट में अपने फूड कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम फूड कॉम्प्लेक्स इन एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसलिए अब चूंकि एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी लिबरेट नहीं होंगे, जिससे आपको क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑस्टियोप्रोसिस। क्या हो सकता है? ऑस्टियोप्रोसिस, राइट। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्या होगा? योर बोन्स विल बी वीकेंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम यू माइट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीसीमिया। क्या? हाइपोमैग्नीसीमिया, ओके। This is all about the side effects of proton pump inhibitors, right? Okay, today we are going to start the next class of anti-ulcer drugs, and that class is prostaglandin analogs. क्या है नाम? क्या है? Prostaglandin analogs. Or prostaglandin analogs में there are a lot of drugs, but we will discuss only one drug. And the name of drug is misoprostol. क्या नाम है? The name of drug is misoprostol. Listen, prostaglandin analog drug is misoprostol, and what is the pharmacodynamic or the mechanism of action of misoprostol? Listen and remember. We have already talked about there is EP3 receptor on the parietal cell, right? So misoprostol bind with EP3 receptors on parietal cells, right? Activates, then activates GI pathway, GI pathway, thereby decrease intracellular intracellular cyclic AMP, right? And protein kinase A level, ठीक है, that ultimately reduce gastric acid excretion, right? This is the first, you can say, mechanism or pathway of misoprostol. And second, and already you people know it, prostaglandin analogs or prostaglandins, those are going to be produced in the parietal cell, have certain other activities. For example, आप लोगों को पता है वो क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को ज्यादा करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? म्यूसिन की प्रोडक्शन को क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, जिससे सारा जो एसिड का इन्वायरमेंट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ये किसका रोल होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का। दूसरा हम कह सकते हैं मीदोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल आल्सो stimulates the mucin bicarbonates production and increase
and increase mucosal blood flow. So in this way, it gives its anti axial production activity on misoprostol. Okay, so this is all about the mechanism of action of misoprostol. Now come towards the pharmacokinetic of misoprostol. Misoprostol is given through oral route, right? And its metabolite is active, means that the parent compound is not active. क्या कह रहा हूँ, parent compound active नहीं है, बल्कि this drug goes into the liver, and in the liver it is going to undergo some metabolic changes and ultimately form a new molecule or new metabolite of that drug that is basically going to perform its normal or pharmacological activities. ठीक है, इसकी हाफ लाइफ 20 से 40 मिनट है. ठीक है, एक्सक्रीशन किस में होती है, यूरिन में. और एंड इट्स इफेक्ट स्टार्ट इन 30 मिनट्स. क्या है, इफेक्ट स्टार्ट्स इन 30 मिनट्स. और नेक्स्ट पॉइंट है फूड एंड एंटासिड्स. फूड एंड एंटासिड्स decrease misoprostol absorption, right? So this is all about the pharmacokinetic of misoprostol. Now come towards the clinical uses of misoprostol. It is used in NSAIDs. NSAIDs induce ulcer. So you people have to tell me why this is going to be used in the NSAID induced ulcer. क्योंकि आप लोगों को पता है NSAID क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को नॉर्मली कम करते हैं, जिस वजह से हमें अल्सर हो जाता है या म्यूकोजल डैमेज होता है. तो हम फिर क्या करते हैं, बाहर से उस तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको जाके अगेन रेप्लेनिश करते हैं, राइट? ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द साइड इफेक्ट ऑफ मिसोप्रोस्टोल. डायरिया. डायरिया. नेक्स्ट इज abdominal pain. Abdominal pain और क्रैम्प्स. ठीक है, और ये तकरीबन जो है ना, दिस हैपन्स इन 30% ऑफ पेशेंट्स, राइट? ओके, listen, another thing, listen and remember, misoprostol. Misoprostol is contraindicated in pregnancy. In pregnancy. Why? Listen and remember. जो होता है ना यूट्रस, listen. Let's suppose, for example, this is uterus, right? On the surface of the, listen and remember, on the surface of uterus, there are receptors as well. There are receptor as well. Prostaglandin, glandin receptors. ठीक है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिसेप्टर्स है ना, वो क्या कराते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. वो क्या करवाते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो अब क्या होगा कि जो मीजोप्रोस्टोल है, जो क्या है, मीजोप्रोस्टोल, दिस विल कम, इट विल कम एंड इट विल बाइंड विद इट्स receptor on uterus, right? When it will bind with its receptor, it is going to cause the uterine contraction. Then if there is any thing here will be aborted out through vagina. ठीक है, तो abortion के chances बढ़ जाते हैं. किसके? Abortion के. So that's why this misoprostol also used in the और acts as a contraceptive. मतलब कि ये प्रेगनेंसी को होने से बचाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी यूट्रस के अंदर फीटस होता है, जो भी, उसको ये क्या कराती है, एक्सपेल आउट करा देती है बाय इंड्यूसिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. सो दैट्स व्हाई मिसोप्रोस्टोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ओके.